जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। साथियों नमस्कार, साथी गर ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो टोटल टॉपिक से कवर किया गया है। तो जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं और प्रमोशनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को टोटल का टोटल देखेंगे क्योंकि टोटल क्वेश्चन को कवर किया गया है टोटल टॉपिक से। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, द फुल नेम ऑफ कंडक्ट रूल इज द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। याद कर लीजिए, क्या है नाम? कंडक्ट रूल का पूरा नाम क्या है? आप बोल सकते हैं द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल का टोटल क्वेश्चन बैंक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्किंग प्लेस इज प्रोहिबिटेड अंडर रूल 3C। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3C के तहत। ठीक है, लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन इज, रूल 13A अंडर कंडक्ट रूल्स डील विथ डॉरी। जो 13A है कंडक्ट रूल, वो डॉरी से संबंधित है। किसी से संबंधित है? दहेज से संबंधित है, डॉरी से संबंधित है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, रूल 18 अंडर कंडक्ट रूल्स डील्स विथ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका ये किसी से संबंधित है? 18 मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। एंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन इज, conduct rule dash deals with connection with press or radio, and rule dash deals with vindication of act and character of railway servant. Then answer will be option number A, 8 and 19। 8 और 19 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरे टॉपिक से चलते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। साथियों, नंबरिंग से मतलब मत रखिएगा, ये नंबरिंग कर करके अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्सन ऑफ वन लीव टू अनदर कैन बी परमिटेड विद इन डैश डेज एट द रिटेन रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो 30 डेज, 30 दिन का होगा। क्या होगा? क्वेश्चन फिर से कहती हूँ, कन्वर्सन ऑफ वन लीव टू अनदर कैन बी परमिटेड विद इन डैश डेज। तो 30 दिन हो जाएगा at the written request of the employee. Let us come to the question number 2. And the question is, a railway servant on leave shall not accept any employment without obtaining the previous sanction of dash if it is outside India. That answer will be president. इसके लिए कौन एलिजिबल हो सकता है? तो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, जो बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो प्रेसिडेंट ही एलिजिबल होंगे। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन इज, नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग डैश ईयर्स। तो 5 ईयर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन इज, द लीव ऑन एवरेज पे can be accumulated up to a maximum of dash days. Then answer will be option number B, 300 days. Answer क्या हो जाएगा? 300 days. Let us come to the question number 5. And the question is, the maximum leave on average pay granted at a time to railway servant is 180 days. Answer क्या हो जाएगा? 180 days. Let us come to the question number 6. And question is, a balance of dash days of LAP should be available at credit after debiting leave and encashment. Then answer will be option number A, 30। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, द लीव encashment once in 2 years during services shall not exceed dash at a time
Then answer will be option number B, 10. Let us come to the question number 8, and the question is the pay element of running allowance for encashment of leave shall be dash percent of basic pay for running staff. Then answer will be option number C, 30%. कितना हो जाएगा 30%. Let us come to the question number 9, and the question is the staff at administrative offices are eligible for dash closed holidays, which includes dash national holidays. Then 16 and 3. Answer will be option number B, 16 और 3. Let us come to the question number 10, and the question is only half average pay up to 12 months shall be granted beyond dash months while on work related illness and injury leave. Then answer will be option number B, 6. Let us come to the question number 11. Let us come to the question number 11, and the question is CCL to women employees may be granted up to dash days in entire service subject to condition. Then answer will be option number C, 730 days, 730 दिन. Answer will be option number C. Let us come to the question number 12, and the question is CCL shall not be admissible if the disabled child is more than dash years of age. Then answer will be no limit, option number B. Let us come to the question number 13, and the question is CCLs shall not be granted for less than dash days at a time and not more than dash spells in a year. Then answer will be option number D, 5 or 3. Let us come to the question number 1, and the question is D and A rules are not applicable to permanent. Then answer will be option number B, RPF staff. D and A rules are not applicable to the permanent for only RPF staff. Let us come to the question number 2, and the question is an employee is deemed to be kept under suspension if detained by police for more than 48 hours. Answer will be option number A, for 48 hours. Let us come to the question number 3, and the question is during suspension the employee may be granted subsistence grant. Answer will be option number B, subsistence grant. Let us come to the question number 4, and the question is suspension shall be reviewed before completion of days for further action. Then answer will be option number A, 90 days. Let us come to the question number 5, and question is subletting of government accommodation is prohibited under rule 15A. Let us come to the question number 6. And question is dash is an unauthorized deduction from subsistence allowance. Then answer will be option number B, provident fund. Let us come to the question number 7, and the question is dash is issued for imposing minor penalties. Then answer will be option number C, SF 11. Question में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं. Let us come to the question number 7, and question is dash is issued for imposing minor penalties. Then answer will be option number C, SF 11. Let us come to the question number 8, and question is the normal time allowed for appeal against the order of disciplinary authority is 45 days. Answer will be option number A, 45 days. Let us come to the question number 1, and question is irregularity in the issue of passes in divisions can be condoned by GM, General Manager. Let us come to the question number 2, and the question is first class privilege passes are issued to employees drawing dash GP and above. Then answer will be option number A, 4,200 and level 6.
फ्रेंड्स टोटल लेवल कितने होते हैं? 18 होते हैं, 18 होते हैं. Let us come to the question number 3, and the question is the minimum service required for issue of post retirement complementary passes. Answer will be option number B, 20 years. Let us come to the question number 4, and question is the single journey PTO is valid for a period of days from date of issues, then 5 months. Answer will be option number C, 5 months. Let us come to the question number 5, and the question is dependents can be included only if their monthly income does not exceed 9,000 plus DR. साथियों ये जो सीरीज चल रही है ये अब तक का सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन देखना है, छोड़ना नहीं है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. और जो भी फ्रेंड्स का एलडीसी टेक्नीशियन का एलडीसी का एग्ज़ाम है उनके लिए प्रिपरेशन चल रही है, उनका वीडियो बहुत जल्द ही आ जाएगा. हमारी कोशिश है कि मास्टर वीडियो दूँ ताकि एक ही वीडियो में टोटल का टोटल कवर हो जाए. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन इज द मिनिमम सर्विस required for joining RELHS is 20 years. क्या आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष या 20 years. Let us come to the question number 7, and the question is the one time contribution to join RELHS is equal to 1 month. Then answer will be option number D, prescribed amount. Let us come to the question number 8, and question is the per capita contribution to SBF through budgetary allocation is Rs 800. Answer will be option number C. कई सारे हमारे फ्रेंड्स को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, उनको हिंदी वर्जन समझ में आ रही है, लेकिन वो कोशिश करे कि कम से कम एटलीस्ट उसको रीड तो करे. 1% आ रहा है समझ में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इसलिए मन में ये नहीं रखना है कि ये नहीं आ रहा है समझ में. हमारी कोशिश है हिंदी वर्जन भी दूँ, पर इसको रीड करना है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन इज द असिस्टेंस फॉर फीमेल वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज विथ 1800 GP टुवर्ड्स एजुकेशन फॉर डिग्री डिप्लोमा कोर्स पर मंथ. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, 1500. Let us come to the question number 10, and the question is on transfer to new station railway quarters can be retained at old station on normal rent. Then answer will be option number C, 22 months. 2 months. Let us come to the question number 11, and the question is employees with 4200 GP are eligible for dash railway quarters. Then type 3. Answer will be option number B, type 3. अगर आपके पास जीपी कितना होना चाहिए? 4200 है, तो आप टाइप 3 क्वार्टर्स लेने के लिए एलिजिबल हैं. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन इज ऑन रिमूवल डिसमिजल CR resignation railway quarters can be retained for a period of 1 month. Answer will be option number A. Let us come to the question number 13, and the question is the railway quarters can be retained for a period of days after retirement on normal rent. Then answer will be option number B, 4 months. Let us come to the question number 14, and question is penalty for loss of first class privilege pass issued to railway servant Rs 10 rupees. Answer will be option number B, 10 rupees. Let us come to the question number 1. साथियों सीरियल नंबर को नहीं देखना है, आपको सीरियल नंबर जो भी हो, यहाँ कोशिश की गई है कि प्रत्येक चैप्टर को कवर करूँ और उससे ही कवर किया गया है. Then question number 1 is the hours of work and period of rest rules 2005 does not applicable to workshop employees. Answer will be option number A, workshop employees. Let us come to the question number 2, and the question is the duty at a stage shall not exceed dash for posts classified as continuous. Then answer will be option number B, 10 hours. What? 10 hours. Let us come to the question number 3, and the question is
the statutory limit of weekly duty hours for posts classified as intensive? Then answer will be option number B, 45 hours. Let us come to the question number 4, and the question is, the periodical rest for posts classified as essentially intermittent is 24 hours. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. साथियों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं. 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज, the interval between two successive roster of classification intensive is treated as sort of if it is less than 12 hours. कितना हो जाएगा आंसर? 12 hours या 12 घंटे. Let us come to the question number 6, and the question is, let us come to the question number 6, and the question is, question number 6. The job analysis shall be conducted for a period of 7 to 2 hours. Answer will be option number B. Let us come to the question number 7, and the question is, the running staff working in a link roster are governed by 10 hours rule. Answer will be option number B, 10-hour rule. Let us come to the question number 8, and question is, the ministerial staff are classified as dash roster under HO year. Then answer will be option number A, continuous. Let us come to the question number 9, and question is, the standard daily rostered hours for essentially intermittent post is 8 hours. Answer will be option number B, 8 hours. Let us come to the question number 10, and the question is, no leave reserve shall be provided for teachers. What? No leave reserved shall be provided for teachers. Answer will be option number C. Let us come to the question number 1, and the question is, let us come to the question number 1, and the question is, the minimum qualifying service required for grant of superannuation pension is 10 years. Answer will be option number C, 10 years. Let us come to the question number 2, and the question is, the pay element of running allowance added to running staff for gratuity. Then answer will be option number A, 55%. Let us come to the question number 3, and the question is, retirement gratuity shall be granted to employees who has completed minimum 5 years. Answer will be option number C, 5 years. Let us come to the question number 4, and the question is, family pension shall be sanctioned at enhanced rate for a period of days in case of death which in service. Then answer will be option number B, 10 years, yani 10 वर्ष. Let us come to the question number 5, and the question is, railway servant can option for voluntary retirement after completing a qualifying service of 20 years. Answer will be option number C, 20 years. Let us come to the question number 6, and the question is, the additional pension sanctioned to pensioners on attaining the age of 85 years. Then answer will be option number B, 30%. Let us come to the question number 7, and question is, competent authority may approve for withdrawal of resignation within days on valid reasons, then 90 days. Answer will be option number A. Let us come to the question number 8, and question is, the maximum death cum retirement gratuity payable to government servant. Then answer will be option number C, 20 lakhs. Let us come to the question number 9, and the question is, the minimum pension or family pension with effect from the 1st of January 2006 shall be Rs 9,000 rupees.
Let us come to the question number 10, and the question is, the employees joined on or after dash are governed by new pension scheme. Then answer will be option number C, 1st of January 2004. Let us come to the question number 11, and the question is, the SRPF account number consists dash digits, whereas PPAN consists dash digits. Then answer will be option number C, 8 or 16. Let us come to the question number 12, and the question is, the employee's contribution towards NPS shall be 10% of basic plus DA. Answer will be option number B, basic plus DA. Let us come to the question number 13, and the question is, compassionate allowance may be sanctioned on merits by the disciplinary authority in cases of both. Both means removal or dismissal. Answer will be option number C, A and B both. Let us come to the question number 14, and the question is, the ex gratia lump sum compensation payable for death due to accidents while on duty. Then answer will be option number B, 25 lakhs. Let us come to the question number 15, and the question is, pension can be commuted to the maximum extent of dash on retirement. Then answer will be option number A, 40%. Let us come to the question number 16. Not 16. Question is over. साथियों बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और कीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें. कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट को ज़रूर मेंशन करें नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक से चाहिए. और वैसे मैं बता दूं कि अभी अपकमिंग टाइम आज ही डाल दे रही हूँ. वो LDC का जो क्वेश्चंस है वो उसका वीडियो एक सेपरेट आ रहा है, इसलिए वो टेंशन नहीं है. तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.